Hello everybody, good afternoon. Yes, please help me test connection. Please confirm if I'm clearly audible, screen visible. Good afternoon, Nishant. Yeah, hi Nishant. So very well, that's my cue. Okay, first thing first, my screen should not be still. Is it moving properly? Mm-hmm. Okay, then everybody of you must have received a test mail. So please tell me if somebody has not received it. Please check your spam. अगर रिसीव नहीं हुआ है तो स्पैम चेक कर लीजिए, कभी कभी स्पैम में भी चला जाता है फर्स्ट में, बिकॉज इट वाज जस्ट टेस्ट. किसी ने अगर अभी तक ईमेल आईडी नहीं दिया है मेरे को, which I'm not very sure of, किसी का ऐसा जिसने ईमेल आईडी नहीं दिया, प्लीज ड्रॉप मी अ मेल लाइक दिस, योर फुल नेम and your batch number in the subject line. You don't need to write anything in the body. So that will act as the mailing list. You will keep receiving some material over there. Some of you we were discussing about a book by O'Reilly. So I found a link. It was online available. So I dropped you there in your Telegram group. Although you will realize that you don't need it, honestly, but just for the sake of reference, you can use it. Okay, I think all set. Going ahead with ours today. तो हाँ जी, कल ये सब राहुल भैया हम मिल चुके हैं इनसे, छोटे बड़े मंजिले, and we realized that case sensitivity I have selected everything and done so far. यहाँ तक का कोड सभी के पास होगा. नहीं है तो बता दो. I will send this whole code in one go to all of you. Okay, no problem at all. Just a moment, please. Here it goes. It's on your mail ID. You just have to copy paste. तो कल हमने थोड़ा सा नेटिविटी सभी चीजें देखा था. One just one thing which you also need to know is
PC, your mail ID is. Could you drop me on the private My chat? mail. Okay, okay. You received the test mail, and you did not receive this one. Okay. Iti, I hope you have received it now. Abhilash, did not this the code is just written like a mail there. It does not have attachment. I have not sent you a .r file. The mail is written. You just have to copy it from mail itself. Now copy paste तो कर लो. Okay. One more thing, which are the special keywords which you should know. अभिलाष एक टेस्ट मेल भेजा है, दूसरा मेल भेजा है जिसमें कोड 1 लिख करके भेजा है. The subject line is code 1 of ours. Check spam if it is not in inbox. Okay. Okay. Very fine. Yes, Ajmal, this was the code which we ran yesterday. So it is just in one go because yesterday I was dropping 4 5 lines at a time. So now it is in one go. You can create a file in the same sequence as it was run. Just for the sake of convenience. If it is ready with you, you don't need to do anything. And just for sake of reference. If you want to refer the recording and run the code again, it is just for me. Moving ahead. Yesterday we saw that there are something called true and false. Now, true and false are the special keywords in any programming language. True and false uh, are special keywords which convey certain meaning to the programming language. अगर मैं एक condition लिखता हूँ तो true and false return आता है. What if I type true and false? So try this out. In R, this capital T stands for true.
and capital F stands for false. तो completely true false लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, only capital T और capital false, capital T और capital F से पता चल जाता है उसको. Let's see. कल हमने देखा था सिंगल इक्वल टू साइन इज असाइनमेंट, डबल इक्वल टू साइन इज कंपैरिजन. अच्छा, विदाउट रनिंग इट, कैन यू टेल मी क्या आंसर आना चाहिए इसमें, क्या आउटपुट आना चाहिए? आई एम सेइंग टी डबल इक्वल टू एफ, तो क्या आंसर हो जाना चाहिए इस बात का? फॉल्स आना चाहिए, एरर आना चाहिए. एक्चुअली अब करके देख लो. एरर इसलिए नहीं आएगा बिकॉज मैं कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आर से कुछ पूछ रहा हूँ. डबल इक्वल टू मीन्स कंपैरिजन. मैं कह रहा हूँ क्या टी और फॉल्स बिल्कुल इक्वल हैं, इफ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो आर मेरे को यहाँ पर आंसर करेगा नहीं. ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल बातें नहीं है. ओके, टेल मी अभी क्या होना चाहिए. आई होप दिस स्क्रीन इज लेजिबल, पढ़ने में आ रहा होगा मेरे स्क्रीन पे जो भी कोड में हाईलाइट कर रहा हूँ. विदाउट रनिंग कैन यू टेल मी क्या होना चाहिए? आई एम सेइंग टी इज ग्रेटर देन एस. म्हणजे in some sense I am saying true is greater than false, and as it happens आंसर आता है ट्रू. आर का कहना है ट्रू इज ग्रेटर देन फॉल्स बिकॉज बिकॉज कोई बता सकता है? बिकॉज लॉजिक. हाँ, फैंटास्टिको, फाइनली शिल्पा said it. ट्रू एंड फॉल्स आर बूलियन वैल्यूज. एक्चुअली बूलियन या बाइनरी या डिजिटल जो भी कहना चाहो. सो न्यूमेरिकली ट्रू इज 1, फॉल्स इज 0. एंड रिमेंबर, अगर किसी ने कभी पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, एस्काई कोड. हाँ जी, अबैकस, बेसिक, सी, किसी से थोड़ा बहुत भी वास्ता पड़ा होगा. तो रिमेंबर बाइनरी कोड क्या होते हैं? 0110. एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1. तो दे आर दोज वैल्यूज. तो ट्रू इज 1 एंड फॉल्स इज 0. अब मैंने एक मैथमेटिकल कंपैरिजन बोल दिया है, तो कौन बड़ा है तो वो उनको मैथमेटिकली ट्रीट कर रहा है. ट्राई डूइंग दिस. टी प्लस टी, तो क्या आ जाना चाहिए? करके देख लो. समझ गए क्या हुआ? वन वन क्यों आएगा? अरे अभी अभी तो बात हुई थी ये. ट्रू का मतलब 1 है उसके लिए. मैंने कहा ट्रू और प्लस ट्रू, मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया, तो अब वो ट्रू को 1 ट्रीट करने लगा, और 1 + 1 इज 2. तो उसने उसका आंसर दे दिया.
Okay, fair. So just a comment for you people here in the chat box. जो भी आप ट्रू फॉल्स कर रहे थे कहीं इस कमेंट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए सो दैट इट विल रिमाइंड यू कि हुआ क्या है. आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, उसने मैथमेटिकली ट्रीट करना शुरू कर दिया सी और एफ को. ओके, देन देयर वर सम फंक्शंस. ये तो कल भी बात हुई थी हमारी. कुछ फंक्शंस होते हैं आर में. देयर आर सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस. तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मालूम है आप लोगों को. साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, एक्सपोनेंशियल, दिस एंड दैट, स्क्वायर रूट. ऊपर से अच्छा टेल मी क्या जा रहा है अभी ऊपर से. आई ट्राई टू ट्वीक इट आउट. R Studio, all in all, R Studio is tool. Acha, maybe I should tweak it like that. Just switch on your mic. Tell me the question. हेलो Mhm. सर, एक्चुअली कल मैं थोड़ा सा लेट था ना, तो एकदम से मैं जब बीच में ज्वाइन किया तो ये सब चल ही रहा था, तो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा उसके बाद से. और अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें. बाकी जो आपने बाद में कराया था 4 बजे के बाद, वो मुझे आ रहा है. No, that's okay. But आपको रिकॉर्डिंग मिल गया होगा. आज सुबह ही करवा दिया था मैंने. डिड यू गेट नहीं, टाइम? उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं था सर. क्या बात कर रहे हो? कल का पूरा सेशन रिकॉर्डेड आपके लोगों की प्लेलिस्ट पे है. प्लेलिस्ट का लिंक आपके ग्रुप पे है. कैन समबडी चेक? सर, तो ग्रुप वाला समझ में नहीं आ रहा था ना, कौन से ग्रुप में मुझे ऐड ही नहीं कर रखा था किसी में पे. आप लोगों अच्छा, हाँ, किसी और की भी हालत खराब है क्या ऐसी? देर, हाँ, फाइनली, थैंक यू ब्रदर. कल भी बात कर रहा था, अगर ग्रुप में नहीं है तो आप लोगों के पास नंबर होगा करण का या दामिनी का. उन्होंने मेल ड्रॉप किया था आप लोगों को सबको विद अ लिंक. हाँ, थैंक यू अजमल. हियर इज द लिंक टू ज्वाइन दैट ग्रुप. यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. और वहीं पर अपडेट, आई थिंक वो सारे अपडेट इसी पे देंगे, करण एंड दामिनी. आपके सेशन रिकॉर्डिंग का लिंक वहीं पर है, जो प्लेलिस्ट, इस पर ये बाकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड होंगे. एंड इट इज अ टेलीग्राम ग्रुप, इट इज नॉट व्हाट्सएप. ये सारी बात तो हुई होंगी बैच लॉन्च में. बैच लॉन्च में थे नहीं क्या आप लोग? बैच लॉन्च वाले दिन आई वॉज ओके, आई वॉज अराउंड. आई टुक अप माई पार्ट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन शुरू में 1 घंटे 2 घंटे मेरे ख्याल से यही बात हुई है सारी अबाउट द गवर्नेंस.
How come you people have missed your batch launch here? I don't know how many of you have shared your email ID. Current sent this mail 3 days ago. Here it was, and I was marked to this, clearly stating to install the Telegram app, providing the link of the group. Everything well in time, well in place. You received the scheduled mail? It is the same thread. However, I can mark him up a mail, but I would say that, like Anpal did, yeah, you can connect with Sakshi or Karan, no, if you don't have this group link. So get onto that Telegram group. Just tell your name, number there. Link यहाँ पर भी डाल दिए हैं अभी अजमल ने. So you can join it. Keep on receiving further notices. So for now, Abhilash, you will have to keep some patience because you can get the recordings. So both the recordings जब side by side रख के देख लोगे, code मैं भेज दूंगा. And if you get some time during the weekdays, we can connect for an hour or two, and I can walk you through once again. I think चलेगा ऐसा? Okay, cool. कल हम functions की बात कर रहे थे. So ये कुछ functions हमने देखे थे. एक function पे मैंने question mark भी लगाया था. Suppose there is some function, say I am saying there is a function median. Now what does, क्या करता होगा ये function? Any guess? Median, क्या होता है median? So see, R and Python both are called interactive languages for several reasons. Middle value return of a vector, okay, 1, 2, 3, 4, 5, so 3 is median. Very fantastic.
So suppose many times it may happen you may counter a function which you don't know what does this function do. So the key is that there is a function median. There is a function named help which gives you help of that function, help of some other function. So I am saying help of median. I execute this. You see your fourth pane tha left, the bottom right pane which was useless so far. वहाँ पर एक help tab activate हुआ है and it is telling you what is a median, what is the class of this function. It is a statistical function and it explains the syntax of the function. It is a median. इसका इनपुट x होता है और भी कुछ आर्गुमेंट इसमें दिए जा सकते हैं and all the details. Fair. So this is just to keep with you. अगर कभी ऐसा होता है कि फंक्शन समझ नहीं आ रहा तो किससे पूछते हैं? मुझसे नहीं पूछते, मतलब मुझसे भी पूछ सकते हो बट पहले हेल्प पढ़ सकते हो. बहुत ही सिंपल है. साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये अगर समझ आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहे तो हेल्प डॉक्यूमेंट देख लेते हैं. बढ़िया. Now there is something called, we call it composite functions. Composite function in the sense, suppose I want to calculate log of 15. तो log of 15. Suppose मेरी जरूरत कुछ ऐसी हो. Log of 15 क्या आया? 2.7 point something something something. This value. और अब मेरी कैलकुलेशन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अब मेरे को log of 15 जो आया था, जो भी वैल्यू आया था, मुझे उसका साइन थीटा भी करना था. तो ये कर लिया. साइन थीटा. सपोज अब जो साइन थीटा ने, इसका साइन थीटा निकालने के बाद जो आप जो भी आया है, मुझे उसका स्क्वायर रूट भी चाहिए था. मेरी कैलकुलेशन ही कुछ ऐसी थी. तो आई नीड एच क्यू आर टी, स्क्वायर रूट कर लूंगा, स्क्वायर रूट फंक्शन. चलो वो भी आता है हमें. हाँ यस निशांत, यू कैन चेक हेल्प ऑफ एनी फंक्शन. जिस भी फंक्शन का तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये कैसे ऑपरेट करता है, यू कैन चेक द हेल्प ऑफ इट. और ऐसा ही हर फंक्शन के लिए एक हेल्प डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी आर में बिल्ट इन है, यू कैन चेक हेल्प डॉक्यूमेंट. सो दैट इज व्हाई मैं बता रहा था आर ऑन. हेलो. हाँ यस. सर आपने जो साइन थीटा का सर किया था वो थोड़ा बता दोगे लॉग के बाद? हाँ बता रहा हूँ. I was telling that these tools are called interactive languages, which are not like आप में से जिनको टेस्ट होगा थोड़ा C++ का, they will realize that. Here हम कैसे रन कर रहे हैं? We are running line by line. जिस लाइन में एरर आया पता चल जाएगा आपको, you can correct that line. जिनको C का थोड़ा सा भी टेस्ट है, they know that what a pain it was. पता लगा you have written a code of 1000 lines and now it has thrown, you have run that code. तो पूरा कोड एक ही बार में रन होगा, कंपाइल होगा और उसने 20 एरर्स फेंक दिए. अब ढूंढ करो. So these languages are not that kind. These are interactive. You can run line by line and line by line में आपको पता चलता जाएगा क्या क्या हो रहा है. मैं यहाँ पर क्या बता रहा था? सपोज मेरी कैलकुलेशन कुछ ऐसी है, लाइक आई हैव टू कैलकुलेट. सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ इसी समय
मैं चाहता हूँ 15 का लॉग कैलकुलेट हो और जो लॉग वैल्यू आ जाए 15 की उसका साइन थीटा पता चल जाए मेरे को, और जो साइन वैल्यू आ जाए उसकी उसका मेरे को फिर स्क्वायर रूट लेना है। बात समझे मैं क्या कर रहा हूँ? अब वही कर रहे हैं, तो कैसे करूंगा? मैंने कहा लॉग लेना है 15 का, तो लॉग ले लिया, उसका आंसर आया ये, वो तो आर ने बता दिया मेरे को। ठीक, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैंने लिखा साइन फंक्शन और उसमें ये वैल्यू पेस्ट कर दी। तो अब इसका साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। लॉग 15 जो आया था उसका साइन थीटा कैलकुलेट कर, तो साइन थीटा कैलकुलेट हो गया, साइन वैल्यू ये आ गई। अब ये कॉपी कर ली मैंने, कंट्रोल सी। मेरे को बोला गया था इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, जो भी साइन वैल्यू आ जाए। तो साइन वैल्यू आ गई, मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन लगाया, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर ये वैल्यू रखी, और अब मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ उसका, तो ये निकल गया। ठीक है, बट ये कैसा हो रहा है? ये करने में कोई बुराई नहीं है, कर लिया, बट आई एम डूइंग इट इन स्टेजेस। कैन देयर बी अ बेटर वे? यस देयर इज बेटर वे, जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस विद इन अ फंक्शन, एंड टेक्निकली उनको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट फंक्शंस। लाइक, रिमेंबर हमने बोर्ड मास की बात की थी, है ना? जैसा बोर्ड मास तुम्हें आता है वैसा आर को भी आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखते जाना, देखते जाना। साइन थीटा में ये वैल्यू मुझे नहीं कैलकुलेट करके रखनी, मैं कह रहा हूँ लॉग 15 कैलकुलेट करो, लॉग 15 कैलकुलेट करो। तो पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? अंदर वाला, यही तो होता है बोर्ड मास, इनर ब्रैकेट्स, द इनर मोस्ट ब्रैकेट इज सॉल्व फर्स्ट। तो वही हो रहा है, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा 15, उसका ले लिया लॉग, अब पहुंचे बाहर वाले ब्रैकेट पे, अब उसका ले लेना साइन। चलो अच्छी बात है, अब साइन जो भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ मुझे ये भी कैलकुलेट नहीं करना, जो भी आए अपने आप कैलकुलेट कर लो और उसका कर देना स्क्वायर रूट। गॉट द आइडिया? तो फंक्शन विद इन अ फंक्शन, सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट वो सॉल्व हो गया, फिर आउटर ब्रैकेट, फिर आउटर ब्रैकेट। हाँ, द की इज इसी, यहाँ पर हम जैसे मैथ्स में लिखते थे ना कि कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट और वो रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। कोडिंग में जब हम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फंक्शन का ब्रैकेट हमेशा पैरेंथेसिस ही होगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कुछ और है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब कुछ और है। दिस राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस मीन्स फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है अभी देखेंगे थोड़ी देर। Okay, so just comments and whatever I have done here in the chat box.
ठीक है जी, 2-3 नई बातें पता चल गई। फंक्शन फंक्शन के अंदर भी काम कर सकता है। कोई फंक्शन समझ नहीं आता तो हेल्प देख लेते हैं, उससे यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि वो फंक्शन कैसा काम करेगा, उसका मतलब क्या होता है। Let's do one thing. Take a minute. I'm dropping a code just for the practice sake. I'm dropping a code. Run it line by line. Try to understand. और समझ आ रहा है क्या? कोई क्वेश्चन होता है 1 मिनट में बात करते हैं। तो टेक सम टाइम, रन इट, समझते हुए रन करने की कोशिश करिए। हियर इन द चैट बॉक्स।
ओके ओके आई सी। इसके फाइनल आउट में 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा। विच आउटपुट अजमल, क्या इसकी बात कर रहे हो? अच्छा तुम कह रहे हो इनको एक एक करके रन करूं तो फाइनल आउटपुट कुछ ये आ रहा है। अच्छा ठीक है, और कंपोजिट में रन करूं तो कुछ आउटपुट में डिफरेंस है। अच्छा ये वन हाँ सर, लास्ट जो डेसिमल हमने में। सबसे पहले लॉग और साइन फिर स्क्वायर रूट किया था हाँ उसमें 648142 था, और जब हमने सारे एक साथ किया था हाँ तब हाँ देख रहा हूँ मैं। 648141, तो ये है एक ना। पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। और हाँ वही, तो वो हाँ डिफरेंस विल इट मैटर? यू टेल मी, विल इट मैटर? इट इज 1 2 क्योंकि 3 4 5 6 आई थिंक इट शुड। सेवंथ प्लेस ऑफ डेसिमल। So what does it matter? Seventh place of decimal, Ajmal. अगर हाँ, अगर इफ यू आर प्लेइंग विद बिग नंबर्स देन इट माइट मैटर, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। और जो आपने अभी S1 S2 वाला दिया है, हाँ इसमें मेरे में मतलब मैंने इसमें कोड रन करके देखा तो वो एरर आ रहा है, S1 नॉट फाउंड। एक तो अच्छा सी, एक तो चैट सब लोग चैट पब्लिक कर दीजिए। डोंट टेक्स्ट टू प्रेजेंटर और ऑर्गेनाइजर और जस्ट मी। कीप योर चैट ओपन टू एवरीवन। ठीक है, so for one in such a rigorous calculation, so these kind of decimal places won't really matter. Another thing, so you're getting error. चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है, उसमें औरों का भी क्वेश्चन है। सी, आप लोग जब डेटा से डील करेंगे, जो हम कई बार बात कर चुके हैं, लाइक डेटा वही एक्सेल फाइल एंड एक्सेल शीट, तो कैसा कैसा डेटा आप लोगों के सामने आ सकता है। समटाइम्स यू विल हैव नंबर्स, समटाइम्स यू विल हैव अल्फाबेट्स। यस और नो? डेटा कैसा होगा अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, जैसे हम कल बैंक वालों की बात कर रहे थे, तो कहीं पर क्या होगा, यहाँ पर कस्टमर का नाम है तो अल्फाबेट्स, यहाँ पर क्या है, कस्टमर का अकाउंट बैलेंस, यहाँ पर कस्टमर की एज तो नंबर, यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस तो यस अगेन कैरेक्टर्स। यस और नो? तो नंबर्स के बारे में काफी बात हो चुकी। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू strings. Strings means collection of alphabet, and whenever I need to tell R that this is string, I will have to put it in single quotes, between single quotes, or maybe between double quotes. Both work well. दोनों का मतलब वही है। So what I am doing here is I am creating a variable s1, नाम है उस वेरिएबल का। ये तो हम कल देख चुके। वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। I am calling my variable should be s1 and I am assigning a value to this variable. What is the value? It is a string called my. So now there is a variable s1 in the environment. Whenever you run assign something, keep an eye on environment कि वो बन भी गया है कि नहीं बन गया है। जो तुम्हें एरर आया है अजमल, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। तुम्हारा वेरिएबल है ही नहीं एनवायरनमेंट पे फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट। मे बी यू फॉरगॉट टू रन दिस पीस ऑफ कोड जहां पर असाइनमेंट हो रहा था, तो अभी वेरिएबल ही नहीं बना, मिलेगा कहां से? नेक्स्ट आई एम अगेन क्रिएटिंग अ वेरिएबल s2। इसका नाम इस वेरिएबल में आई एम पुटिंग अ वैल्यू which is again a string, mentioning in double quotes the string is apples।
So now there is another string apples. If I want to see these values, तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वेरिएबल लिख के रन कर देते हैं. I want to see what is s1, it is my. Then there is a function class. ये parenthesis जब भी देखो ना, रिमेंबर हमने बात की थी, parenthesis यानी फंक्शन. सिंटैक्स हमेशा यही होगा, फंक्शन नेम parenthesis open and in between some argument. Yes, we talked about this. So the function is class here, क्योंकि साथ में parenthesis लगा हुआ है. What is the argument here? S1. I am trying to check the class of S1. And what does it tell me? It tells me it is a character. ठीक है, तो अल्फाबेट्स या स्ट्रिंग, इनका क्लास क्या होता है, या डेटा टाइप जिनको हम बोलते हैं, दैट इज कैरेक्टर. तो उनका क्लास क्या होता होगा जहां नंबर होते हैं. लाइक हमने ये राहुल 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 बना रखे थे. कैन यू ट्राई टू चेक व्हाट इज द क्लास ऑफ एनी ऑफ द राहुल्स. जस्ट check the class of न्यूमेरिक वेरिएबल जहां पर हमने नंबर असाइन किया था. इस वेरिएबल को हमने असाइन किया और स्ट्रिंग, तो उसका क्लास बताता है कैरेक्टर. अगर नंबर करते हैं तो नंबर का क्लास क्या बताता है, जरा देख लो, चलो चेक करके बताइए मेरे को भी. गॉट दिस. ठीक बात है. अभी जो बात कर रहे थे हमारी एक्सेल शीट की, तो जहां अल्फाबेट्स होंगे दे आर, उनका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर. जहां नंबर्स होंगे उनका डेटा टाइप क्या होगा, न्यूमेरिक. नाउ लेट्स सी समथिंग. इट इज डिफरेंट विद वेरियस लैंग्वेजेस. हमने बोला S1 प्लस S2. अच्छा, ओके. करके देख लिया S1 प्लस S2. आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस जस्ट इन अ सेकंड. S1 प्लस S2 यानी मैं कह रहा हूँ ऐड कर दो, तो क्या कहता है, एरर दे रहा है. हाँ सही कह रहा है वो. यार मैं कह रहा हूँ माई प्लस एप्पल्स कर दो, कैसा बताएगा वो क्या होता है माई प्लस एप्पल्स. तो आई एम आस्किंग नॉनसेंस क्वेश्चन, आर इज थ्रोइंग एन एरर. अल्फाबेट्स ऐसे ऐड नहीं हो सकते ना, तो ठीक बात है वो. कमिंग टू नंबर 1 was क्वेश्चन ऑफ इसी. इसी यू ट्राइड क्लास वाई. रिमेंबर कल हमने वाई रन किया था, आप लोगों ने वाई बनाया था. क्या वैल्यू असाइन किया था वाई को? इफ यू डिड नॉट चेंज इट वुड हैव बीन 6.
तो y की वैल्यू इस समय क्या है? इट इज अ नंबर। तो उसकी क्लास क्या बता रहा है वो? ऑब्वियसली न्यूमेरिक। ओके, coming on to Prashasti, how many data types we have in R. So I would counter question you here. How many data types should be there if I want to represent data? मेरे पास डेटा कैसा कैसा आ सकता है? मेरे पास नंबर्स आ सकते हैं, मेरे पास कैरेक्टर्स आ सकते हैं। हाँ, कैर वेर कैर बोथ आर कैरेक्टर्स इवेंचुअली। मेरे पास डेसिमल भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है। int, big int, small int. Okay, not going there. I'll tell you something. See, broadly, you will have three types of data eventually. जो आप बात कर रहे हो, suppose this. If this is address, this be the address of somebody. It is eventually character, yes or no? Character ही तो है. Now within character there can be varchar and etc. you are talking about. They are just variety of character data types. For now we can stick to character broadly. Another data type which could be is a number. तो ये न्यूमेरिक हुआ, नंबर है. हाँ, विद इन नंबर कैसा कैसा हो सकता है? नंबर हो सकता है इट इज अ होल नंबर, डेसिमल पार्ट नहीं है तो हमने उसको इंटीजर बोला. डेसिमल पार्ट है तो हम उसको डबल या फ्लोट बोलते हैं. बट बिफोर दैट इट इज नंबर, यस और नो? व्हाट एल्स कैन हैपन? और किस तरह का डेटा हो सकता है आपका? और भी कुछ हो सकता है विच इज नॉट अ नंबर एंड विच इज नॉट अ कैरेक्टर. अनदर काइंड में भी, यस, जो अभी देख रहे थे आप, ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स आई टॉक्ड अबाउट, दीज आर स्पेशल कीवर्ड्स. जब मैं किसी चीज को ट्रू या फॉल्स बोल रहा हूँ तो आर को समझ आता है इट इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी कैरेक्टर. दीज आर बूलियन वैल्यूज और इनके डेटा टाइप को हम बोलते हैं लॉजिकल. तो ब्रॉडली डेटा टाइप ये तीन ही हैं, बाकी इनके फिर वैरायटी आती है. ठीक है जी. तो कीप इट सिंपल फॉर नाउ. अभी कैरेक्टर, न्यूमेरिक, लॉजिकल, इनमें चलते हैं. अल्फा न्यूमेरिक अभी देखते हैं आपका थोड़ी सी देर में. क्लास ऑफ S1 चेक किया तो कैरेक्टर आता है, आना भी चाहिए. S1 इज अ स्ट्रिंग. क्लास ऑफ Y चेक किया तो न्यूमेरिक आता है, आना भी चाहिए. बिकॉज बिकॉज हाँ, भूल जाते हो ना तुम, कल Y बनाया था हमने, मेरे एनवायरनमेंट पे है वो अभी. इट इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप. व्हाट इज द क्लास ऑफ दिस? क्या आंसर आया है और क्यों आया है कि ये समझ आता है? डज एवरीवन गेट इट? लॉजिकल आता है, और लॉजिकल क्यों आता है? न्यूमेरिक न्यूमेरिक तो आता ही नहीं अभिषेक.
रन करके तो देखो. See, its data type it is telling it is logical. Reason because again board mass. Remember board mass? मैं क्लास चेक करना चाहता हूँ किसकी किसकी इसकी. तो ब्रैकेट में जो है पहले वो सॉल्व होगा. ब्रैकेट के अंदर क्या है? देयर इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. आई एम कंपेयरिंग वेदर 8 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6. हाँ जी, क्या आंसर होगा इस कंडीशन का? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. इन दिस केस फॉल्स होगा. पर ट्रू हो या फॉल्स हो, जो भी हो, उसकी क्लास क्या होगी? ठीक है. चार स्पेशल क्लास लॉजिकल. तो दैट इज इसकी क्लास इट इज रिटर्निंग एज लॉजिकल. ठीक है, बढ़िया. So this was some very basic things. So what we have understood so far is we have understood that what is variable. We have gone through the data types. What are the data types? Broadly, there are three: character, numeric, and logical. Right? We have functions, several functions, and functions can run like composite functions also, function within function. So I can put function within a function also. Now we are moving towards how data can be analyzed here. See, somebody asked me, when the domain of data analysis got traction and it kind of became popular, R is the tool which is developed specifically to deal with data sets, specifically for statistical analysis. R is not like the uh, developers language like C and Java and Python. They are full-blown programming languages. R is not that. R was specifically built for data analysis only. तो इसका structure, इसके functions, इसके facilities, they are all created with keeping in mind that it has to deal with data sets. So there comes data structures. Data structures, that when I have to import data, what are the structures that I can create in R so that it can be efficiently analyzed. So the most basic data structure is called vector. What is a vector? Vector is a linear set of values. As simply put, linear set of several values that becomes a vector. In the context of data set, you can call it like, suppose I have a data set of employees
employees of a company, 1 2 3 4 5 and so on. उन एम्प्लॉयज की एज होगी, ठीक है. Those employees work at some location, okay. Those employees work in some particular shift, okay. Those employees and so many things, yes or no, ऐसे ही तो होंगे. एक्सेल में ऐसा ही तो दिखेगा वो डेटा. So you can call one column as one vector, a linear set of values. Which set of values? It contains all the ages. Another vector which contains all the locations. Another vector which contains all the shifts. ठीक है, got the idea? तो उसी को हम बोल रहे हैं vector in R. It is acting as one single column in some data set. So one set of values. Create कैसे करेंगे? How do we put that in R? Like this. जैसा अभी एज वेक्टर आप बना रहे थे. Here in the chat box, say I have 5 employees and I have to मेरे पास एक्सेल फैसिलिटी नहीं है. I have to bring age column in R. तो हम कैसे बनाएंगे उसको? To create a vector, the function is C, the small c. The small c stands for combine, combination of 5 values, and it should be stored into a variable called age. So age will become a vector. तो रन करके देख लीजिए, एग्जीक्यूट कर लीजिए. We have assigned a combination of 5 values and वेरिएबल को हम कह रहे हैं एज. हाँ, हमें पता होना चाहिए कॉलम नेम क्या था ये. तो दिस इज अ वेक्टर एज. What is the class of this vector? देख लिया होगा आप लोगों ने रन करके. सही कह रहा है भाई, सही बात है. एज है लोगों की, नंबर से तो हुए, तो न्यूमेरिक में होनी चाहिए. और क्या हो सकता था? एज थी तो नंबर आ रहे थे. लोकेशन, वो कौन से लोकेशन पे काम कर रहा है? लाइक आई एम वर्किंग एट दिल्ली लोकेशन ऑफ हिमाटिकस. हिमाटिकस हैज ऑफिसेस पैन इंडिया, है ना. तो डिफरेंट एम्प्लॉयज में बी वर्किंग एट डिफरेंट लोकेशंस. वो कैसे एंटर कर सकते हो? से दिस, व्हाट आई एम डूइंग इज, मतलब टाइप करने का जरूरत नहीं है फिलहाल. हियर इन द चैट बॉक्स हमने एज वेक्टर बनाया, क्लास क्या न्यूमेरिक था. नाउ वी आर क्रिएटिंग अ वेक्टर कि कौन सा एम्प्लॉय किस लोकेशन पे काम कर रहा है. So everybody is working at different location. Delhi, Mumbai, Kolkata, Goa, Jaipur and all. गोवा, अरे गोवा में कौन काम करता है? कुछ तो भी दिख रहा है मेरे कोड में.
चलो कोई बात नहीं। तो समझ गए, यहाँ पर मेरे को कैरेक्टर एंट्री करना था। So I have put character, but all of them are in double quotes or single quotes. Otherwise character को accept नहीं करेगा। डबल कोट से उसे समझ आ गया that this is a string, you want to input alphabetical data, तो class is character। Okay, so far so good। What else can happen? C is a function, उत्कर्ष। जैसे अभी देख रहे थे ना फंक्शंस, log फंक्शन log कैलकुलेट कर देता है, sin फंक्शन sin थीटा कैलकुलेट कर देता है। C is function to combine several values into a vector। ओके, तो हमने देखा डेटा में न्यूमेरिक डेटा टाइप हो सकती हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप हो सकती हैं। हमारे डेटा में एक चीज बताओ, लॉजिकल डेटा टाइप कैसी हो? मेरे को कोई डेटा ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को ट्रू एंड फॉल्स में एंटर करना पड़ जाए जिससे वो लॉजिकल हो जाएगा वेक्टर। कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? ना, कुछ नहीं। हाँ पॉसिबल तो है। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई आई वॉन्ट अ कॉलम इन माई डेटा सेट। मेरे को एक ऐसा वेक्टर भी चाहिए जिससे पता चले वेदर दिस एम्प्लॉय इज लोकल ऑफ दिस सिटी और कहीं और से बाहर से आकर के सिर्फ जॉब की वजह से आया। यस और नो? नाउ इट बिकम्स द केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। वेदर एन एम्प्लॉय इज लोकल ऑफ द सेम सिटी, जहां पर काम कर रहा है। चेक कर लीजिए रन करके बात ठीक हो रही है कि नहीं। तो becomes the case of logical vector। बात ठीक हुई? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। और भी कुछ हो सकता है क्या? इन तीन के अलावा और क्या पॉसिबल है? कैन यू टेल मी? एज यानी नंबर्स, लोकेशन यानी कैरेक्टर्स, लोकल यानी ट्रू और फॉल्स।
और भी कुछ पॉसिबल है? हम्म। हाँ, कॉन्टैक्ट की डेटा टाइप क्या होगी निशांत? Can we give only true and false or we need to mention all three and it is your choice इसे जैसे मैंने दिया है ना इन द सेम इफ आई वांट टू राइट कंप्लीट ट्रू एंड फॉल्स तो भी उसको समझ आता है कि ट्रू एंड फॉल्स की बात हो रही है बट देयर इज फैसिलिटी आल्सो ऑफ शॉर्ट हैंड इफ आई राइट कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ तो उससे भी आर को समझ आ जाता है कि ट्रू एंड फॉल्स चाहते हो आप कहना तो जब फैसिलिटी है तो यूज करेंगे ना उसको ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने छोड़ दिया था तो जरूरी नहीं है वैसे हर जगह कंप्लीट लिखना अदर देन दैट पिक्टोरियल डेटा नहीं अभी तो एक्सेल शीट की बात कर रहे हैं राकेश पिक्टोरियल पे भी चलेंगे आगे वहां भी पहुंचेंगे somebody said it if my data is mix and match in the sense for example pay attention here please stop typing suppose मेरे को ऐसा कॉलम भी चाहिए अपने डेटा में जहां पे पता चलता हो कि दिस एम्प्लॉय वर्क्स इन विच शिफ्ट so there are multiple shifts per day and I want to enter कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी शिफ्ट में काम करता है अब प्रॉब्लम क्या हुआ there is a data entry operator who writes shift as 1 to 3 and then there is a data entry operator who writes shifts in roman numbers now roman numbers को represent करने के लिए I don't have any key on keyboard other than alphabets तो उनकी एंट्री आज करेक्टर हो जाएगी what if I have this kind of mix and match if some are character and some are numbers so this kind of data is called heterogeneous data here in the chat box रन करके देखिए and tell me पहले बताओ होना क्या चाहिए and tell me what do you realize कि क्या हुआ है okay you realize that what happens is I created a vector which is mix and match of some numbers and some characters first thing to notice अगर मैं सिर्फ प्रिंट करा के भी देखूं you see now there are double quotes on numbers also जो पहले नहीं थे here प्रशस्ति अगर नंबर्स पे भी डबल कोट्स हैं so that is my cue that is a hint that now they are not numbers now R is treating them as characters so by default if there is mix and match numbers are converted to characters and overall class of this shift vector becomes character
This type of conversion is called coercion बोलते हैं इसको, and it is also something common to almost all the programming languages. This happens that when there is heterogeneous data, the language follows the preference of data types, and it goes like that. Highest preference is for character, then for numeric, and last for logical. तो अगर आपके उसमें मिक्स एंड मैच है तो R देखेगा कि कौन सा मिक्स एंड मैच है. If it is mix and match of say character and number, it will prefer character. If it is mix and match of number and logical, it will convert everything into number. If it is mix and match of all the three, हाँ जी क्या होना चाहिए. तो जो भी डेटा टाइप उसमें अगर एक भी डेटा टाइप ऐसी हुई जिसका हायर प्रेफरेंस है तो वो सबको कन्वर्ट कर देगा हायर डेटा टाइप में. ठीक. हेलो यस निशांत. सर सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि कैरेक्टर है, नंबर है, लॉजिक है, तो हाँ उसमें डिपेंड करेगा कि ज्यादा डेटा कैरेक्टर में है तो वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, या न्यूमेरिक में है न्यूमेरिक में कन्वर्ट होगा. ज्यादा डेटा की वजह से नहीं है. मैं कह रहा हूँ एक भी हुआ तो. ओके. अगर मेरे पास 4 नंबर हैं लेकिन 5वां नंबर जो है वो 5वें नंबर की जगह कैरेक्टर आ गया है उस वेक्टर में. ठीक आई है. हैव अ वेक्टर ऑफ 5 वैल्यूज. नाउ उसमें कोई सी वैल्यू कितनी भी लेगा ना, अगर एक भी कैरेक्टर हुआ तो बाकी सबको वो कैरेक्टर ही मानेगा. तो प्रेफरेंस इन दैट सेंस. यहाँ पे देखो ना, देर आर ओनली 2 कैरेक्टर्स, 3 आर नंबर्स. डिस्पाइट दैट इट हैज कन्वर्टेड एवरीथिंग टू कैरेक्टर. ठीक है. शेयर. Sir, I had one doubt. I tried to run this kind of command just for trial purpose, and I found that it was telling me that AMP not found, object AMP not found. So in this case also the assignment should have occurred like it has characters and इट इज numeric values बिकॉज, as well. बताता हूँ. इट इज बिकॉज डज एनीबडी एल्स रियलाइज कि इसमें क्या हुआ है जो प्रशस्ति ने कोड डाला है. फैंटास्टिक. Oh, हियर इट गोस. okay, sir. Thank you. इज Got it. नॉट कैरेक्टर बिकॉज इट इज नॉट इन डबल कोट्स. तो आर को समझ नहीं आ रहा वो कौन है. अगर वो कोट्स में होता तो आर को पता चलता कि ये कैरेक्टर है. ट्राई कर लो कोट्स में डाल के, इट विल हैपन. तो सर अगर इसमें से सिंगल का पता कर रहे हैं, जैसे शिफ्ट में अभी जैसे हमने ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उसमें से एक का ही पता करना है, जैसे 1 है और 3 हम उसको लेते हैं, तो ये डबल ब्रैकेट्स में आएगा ये. मतलब समझा नहीं. तो जैसे हमने सर क्लास को शिफ्ट का हमने जो क्लास है वो पता किया है उसमें, हाँ तो हमें पर्टिकुलर उसमें सिर्फ एक शिफ्ट का ही लेना है. ये तो सारे शिफ्ट आ गए ना, एक ब्रैकेट में सारे आ गए 1 हाँ. 2 और ये इसमें जैसे नंबर्स अच्छा भी हैं, वो तो वो उसके डबल. कमिंग ऑन टू दैट इज वेक्टर इंडिसेस. वो इंडिसेस पे अभी आते हैं, अभी देखेंगे. जस्ट नंबर. Here in the chat box, just without running them, can you think of the output of these 3 commands here in the chat box? Without running, can you tell me what will be the 3 outputs for these 3 commands? मतलब रन करके तो बता ही दोगे, बिना रन करे बताओ तो मजा है.
समझ आ रही है कहानी, कैसे आ रहा है ये आउटपुट? सिंपल है। व्हाट वी आर डूइंग, बोर्ड मास अगेन, ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट। तो अंदर क्या हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग अ वेक्टर ऑफ 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स, कंबाइन कर लिया। अब बाहर क्या कह रहा हूँ, उस वेक्टर की क्लास बता दो। अब उसमें तीनों तरह का मिक्स एंड मैच है, तीनों तरह का है, यानी एक भी करेक्टर हुआ तो सब करेक्टर हो जाएगा, हो गया करेक्टर। सेकंड लाइन, हमने एक वेक्टर बनाया है 2 एलिमेंट्स का, वन इज फॉल्स अनदर इज ट्रू। तो क्लास क्या होनी चाहिए इसकी, अपर डेटा टाइप इज न्यूमेरिक है। एंड लास्ट, ये बेचारा गरीब लॉजिकल वाला अकेला ही है, हाँ तो लॉजिकल ही होगा, फिर और क्या बचा। ठीक है, बढ़िया है ये। ओके, वेरी फाइन। तो maybe here we can take a break and we resume at it's 4:30 by my clock, so we resume at 4:40. So please be back in time. Okay, just freshen up. उसके बाद आगे चलते हैं वेक्टर ऑपरेशंस पे। Fair? So see you there. Please be back in time. Hi again. Hope everybody is back. Could you guys please ping me? Okay. Okay, some of you for sure. Let's continue with something called vector indexing. Indexing, like say you don't want all the
possible items. Getting the idea? For example, I'm creating a vector called my vector, and it has some elements. And for now, I don't know what their elements are, what they signify. These are age of some children or whatever the data is. I am creating my vector. And if I want to fetch all the values of my vector, well, I print it. I can see that all the values are here. Indices mean I don't want all the values. I want to go to one particular value. That's where the square brackets come in. The square bracket means location. Remember parenthesis bracket की बात हो रही थी. Parenthesis means function. The square bracket means location, index. ठीक बात है, ध्यान रहेगा. So how do we do it? Like this. Maybe I should drop this on your chat box. There. In this piece of code, I am saying go to the third location of this vector. Tell me थर्ड लोकेशन यानी कौन सी लोकेशन हुई? इंडेक्स नंबर 3. तो कौन सा नंबर प्रिंट होना चाहिए? हाँ जी, that's what I wanted to convey. This is something again not usual with programming languages, but with R it is, in a way it is simpler. In R, indexing begins from 1. तो हाँ, जो C या जावा की जो तुम्हारी आदत है वो छोड़ दो थोड़ा सा. वहां पर इंडेक्सिंग 0 से होती है, 0 1 2 3. R में सिंपल है भाई, एलिमेंट नंबर 1 यानी इंडेक्स नंबर 1. तो 1 2 and 3, थर्ड एलिमेंट हम कह रहे हैं it should be 40. So as it happens, it is 40. ये भी ठीक है, ध्यान रहेगा. Suppose you want to fetch multiple items. Multiple items like suppose I tell you that I want to fetch item number 1 and item number 4. तो कैसे कर सकते हो उसको? You may think we can say a square bracket 1 comma 4, but does it happen? Doesn't work. It happens because, see, this is the this is the syntax of a square bracket. You will see when we will go into vector is just linear set of values.
So when we are calling linear set of values, we cannot mention it like that. जब हम 1,4 करना चाहते हैं, I want 2 elements, I will have to do it like that, not this way. I will have to mention it like that, like combination of these two values, and then in the square bracket. Now it will give me, Hanji, first element which is 5 and fourth element which is 10. So this is the way you can fetch multiple values. ठीक है, करके देख लिया आप लोगों ने? Okay, very fine. Another thing which is interesting with R, here, you don't need to type in, just have a look at my screen and tell me. I'm saying my vector greater than equal to 10. What do you think the output of this will be? My vector, वो तो बना चुके हो आप लोग भी. अब मैं कह रहा हूँ my vector greater than equal to 10, तो what do you think इसका output होने वाला है? Without running, if you can think of it, you are not supposed to know the right answers just now, but just to make your brain juices flowing, what is going to happen? Logical, false. So this is something which you should know about R. It will happen like my vector greater than equal to 10, it will give me this output. What it has done, it has returned one true or false for each element. Got it? It is telling whether this is true, whether this is false. It has compared all the values one by one with 10, and if it is greater than equal to 10, then it is true, otherwise it is false. दिखा रहा हूँ. ये था वेक्टर हमारा, इस वेक्टर की वैल्यूज थी, और बाद में मैंने क्या बोला, आई एम कंपेयरिंग दिस एंटायर वेक्टर with a value 10. So what it is doing is, it is comparing each value of this vector with 10 one by one, and it is returning one output for each value of vector. So this is the way it works. So remember, in R, all the operations will happen index wise. ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था. R is built to run on to run for data. Think about it. मेरे को डेटा सेट में कैसा ऑपरेशन होगा? Suppose I have to compare this age. I have to find out only those customers who are say adults. मेरे पास कुछ लोगों की एज है,
So think about it. If I want to see that who of them are about 20 years of age, I will not want to compare each one by one by one by one by one. I want it to be done in one go, and that's exactly what R is built for. It will take entire column, it will compare it with my condition, and it will give another vector which contains the output. Clarity? हाँ, प्रशस्ति वही बता रहा हूँ. There may be, these are 6-7 records. There can be 1000 values. I can be having data of 1000 people and I am having their age or something and I want to compare it with some value. It will give 6 लोग थे, उसने 6 आउटपुट दिए. 1000 होते वो 1000 आउटपुट दे देते. So this kind of facility is already there in R. So remember, every operation on vectors will happen index wise. It will start with index number 1 and it will go up to the index number last. You don't have to worry about each one of them. Nice. Then there is something called negative indexing. Negative indexing. I am saying my vector square bracket and square bracket में मैं कह रहा हूँ not 3. 3 होता तो वो थर्ड एलिमेंट दे देता. मैं कह रहा हूँ -3. तो क्या होता होगा इससे? क्या होता होगा इससे? False. अपोजिट डायरेक्शन से प्रिंट हो जाएगा. थर्ड फ्रॉम द लास्ट. Okay, intelligent guesses, but none of them is true. Negative indexing means everything except that index. If I am saying my vector and I am saying index number 3, so minus negative index number 3. So this negative indexing means leave element number 3 and print rest of them. So element number 3, which was 14, that is omitted from the output. बाकी सारे दे दिए उसको. Yes, Sakshi, you will get it tomorrow. सर ये जैसे -3 आपने किया सर ब्रैकेट्स में. सर ये थोड़ा बता दो कि ये दोबारा फिर नंबर्स कैसे शो कर रहे हैं. -3. सी, जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में किसी चीज की बात कर रहा हूँ, पहले तो ये क्लैरिटी होना चाहिए. मैंने बोला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी लिखता हूँ, तो अब मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ. मैं इन वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ. ये वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं. मैं लोकेशन नंबर 3 की बात करता हूँ. ठीक है. तो मेरे को जो लोकेशन चाहिए वो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दे दी. एलिमेंट नंबर 3, तो एलिमेंट नंबर 3 मिल जाएगा. फिर हमने देखा कि मेरे को मल्टीपल चाहिए होते हैं. तो मल्टीपल मैं कैसे बताऊंगा? नॉट लाइक दिस कॉमा दिस. आई हैव टू गिव द कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशन. मेरे को कौन से लोकेशन के 2 एलिमेंट चाहिए थे? से 1 4 से 5 भी चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल जस्ट कर रहा हूँ मैं. So I have written 1, 4, 5 and I have combined them and then I am putting it all in square bracket. तो भी उसको समझ आएगा कौन कौन से चाहिए लोकेशन. 1 4 and 5 वही लोकेशन प्रिंट हो जाएंगे.
अब मैं बता रहा हूँ, समटाइम्स यू विल नीड नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव क्या होता है कि वो एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे, मैंने बोला -3, यानी मैं कह रहा हूँ एलिमेंट नंबर 3 को छोड़ दो, बाकी सारे दे दो। सो दैट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो वही किया है। आई एम सेइंग माइनस एलिमेंट नंबर 3 एंड बाकी सारे एलिमेंट दे दो। तो देख रहे हो, एलिमेंट नंबर 3 क्या था, 14, उसे छोड़ दिया उसने। बाकी सारे हैं देखो, 5, 8, 14 छोड़ दिया तो 10, 17, 12। दैट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। राशि क्लियर? निशांत क्लियर? I want you to do it quickly. I am saying drop third and fifth element from the vector and print all others. My vector में से थर्ड और फिफ्थ एलिमेंट छोड़ के बाकी सब प्रिंट हो जाए। जरा देखिए करके कैसे करोगे। Okay. Nice. Check it out. The one, जैसा आप लोग कर रहे हो, आपने कहा -3 एंड -5, ये दो लोकेशन छोड़ दे, इन नेगेटिव इंडेक्सेस को कंबाइन कर दिया एंड माय वेक्टर इज प्रिंटिंग व्हाट, एलिमेंट नंबर 3 14 छोड़ दिया उसने, एलिमेंट नंबर 5 17 छोड़ दिया उसने। So nothing wrong in that. This is one way. Another way is, मैंने क्या बोला है, समझ रहे हो क्या हुआ? I am saying combine 3 and 5 first and drop that combination. Anyway, same result. Both are okay. ठीक है, लॉजिक समझ रहे हो? दोनों बातों में लॉजिक वही है। मेरे को थर्ड और फिफ्थ एलिमेंट ड्रॉप करना है, तो एक तो ये क्या कि तुमने नेगेटिव इंडेक्स लिए और उनका कॉम्बिनेशन बोल दिया। दूसरा क्या है, मैंने इंडेक्स पॉजिटिव लिए थे और उनके कॉम्बिनेशन को नेगेटिव बोल दिया। तरीके दोनों ठीक है, काम वही हो रहा जो करना चाहते थे। आई होप क्लियर है ये भी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? Whichever you like, you may follow. In my codes, you will see, usually you will see this method. In many people's code, you will see this kind of method, and both are correct. Nothing wrong. Now, one thing to pay attention to it is, हाँ जी, अभी तक हम क्या कर रहे थे? मैंने बोला थर्ड और फिफ्थ एलिमेंट को छोड़ के बाकी क्या करो, क्या करो, प्रिंट कर दो। समझ रहे हो? मैं सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ, यानी जो ओरिजिनली माय वेक्टर है, जो मेरा वेक्टर है, वो अभी चेंज नहीं हुआ है। It is just printing some elements. Original vector is still the same. अगर मैं my vector दोबारा प्रिंट करके देखने लगूं, वो वैसा का वैसा है। तो now suppose I want to edit my vector. मैं क्या चाहता था, मेरा वेक्टर ऐसा था, ये एडिट हो जाना चाहिए। तो क्या कर सकते हो उसके लिए?
रिमेंबर, अगर मैं मल्टीपल असाइनमेंट्स करने की कोशिश करूं तो ओवर राइटिंग हो जाती है। तो मेरे को अगर ये वेक्टर एडिट करना है माय वेक्टर, तो मैं क्या कह रहा हूँ, चेक दिस आउट। मैंने क्या बोला, वही जो किया है अभी आप लोगों ने। थर्ड और फिफ्थ एलिमेंट माइनस कर दो, किसके, माय वेक्टर के, और बाकी सारे, इसका जो भी आउटपुट आता है, इसका जो भी आउटपुट आता है उसे कहाँ असाइन कर दो, उसी वेरिएबल नेम पे, माय वेक्टर पे ही। तो ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू माय वेक्टर की। ट्राई करिए। ट्राई इट योरसेल्फ। और कुछ याद रखने लायक बात लगे ऐसी तो एक ऐसे ही हैशटैग करके कमेंट डालते रहिए। तीन से नहीं हो पाया है राशि, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट मतलब राशि, you are presenter now. Please share the screen. Let's see what is wrong with your code. Hello? Yes, Rashi. Yeah, sir. When I was just taking the normal code which we have given, no result was there. I have made you presenter. You can share the screen. I'll just share it. Let's see. Oh my goodness. Can you share? Can you see that? I can see that, but अच्छा हो तो गया। See, यहाँ पर तुमने Hello? बोला कि हेलो, हाँ तुमने बोला कि असाइन कर दो सम वैल्यू टू माय वेक्टर। इट इज से व्हाट्स दिस, something glitched with the screen. Rashi, what happened? Is there some Skype call more interesting than our sessions? You want to take it right away? Yes, Rashi, I'm speaking constantly. Guys, can everybody hear me? I think my audio is clear. Rashi, everybody can hear me. बाकी लोगों को बता दे रहा हूँ जिनको लग रहा हो कि रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट इज देयर, इट इज जस्ट दैट पता है क्या हुआ है, आपने असाइनमेंट किया है, कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं बोला है। दिखा दे रहा हूँ। पे अटेंशन टू व्हाट? पे अटेंशन एट एनवायरनमेंट। पे अटेंशन टू एनवायरनमेंट। अर्लियर देयर वर 6 वैल्यूज, अब मैं कह रहा हूँ
उनमें से 2 वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू असाइन कर दो माई वेक्टर पे ही। एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, माइंड यू मैंने प्रिंट करने के लिए कुछ बोला नहीं है, तो प्रिंट वो करेगा भी नहीं। दैट इज वाई नो रिजल्ट। तो रिजल्ट कहाँ है? वो यहाँ नहीं दिखेगा रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ दिखेगा? यहाँ दिख रहा है रिजल्ट। तो रिजल्ट तो है उस क्वेरी का जो हमने रन किया है कोड, इट इज वर्किंग। फेयर? आई होप एवरीबody realizes that. Okay. Sakshi, see, Hadoop ecosystem is not in the curriculum of DSP, but if you wish, I can discuss other nitty-gritties of it, that how we can connect R with a Hadoop ecosystem or maybe Python. So there are, PySpark and Spark R versions of Apache, which connect with big data. हाँ, Prashasti, Spark can use any of the tools. Spark can use R, Spark can use Python. There are modules in Spark to run with both these languages. So, yes, Sakshi, as I said, it can be taken up, but consider it as the extra mile Ematicus will go for you. It is not a regular part of this curriculum. Putting it honestly and bluntly. Okay, so we have seen several things: applying operations on vectors and indexing of vectors. We are coming on to Hello? updating or making corrections in the vector. Yes, somebody was. Yeah, Somebody. sir, Rashi here. Yes, Rashi. Sir, sorry, I lost the connection. Can you please explain me this topic? It's just printing some elements and saving new value. I'm showing you just in a while, just in a moment. I think your audio dropped. I was saying, see, this was my vector. It had 6 elements. Yes. When I tried to print only, like here, I am printing only those elements
without omitting the element number 3 and 5. So it has printed those 4 elements. लेकिन हमने क्या देखा, my vector is the same, उसमें कोई अपडेशन नहीं हुआ है. तो वहीं पर मैं बता रहा था that if I need to update my vector, I should assign the value. मैंने क्या बोला है, my vector में से थर्ड और फिफ्थ एलिमेंट ड्रॉप कर दो, and then I am saying assign it to the same variable name my vector. तो इस पे वो वैल्यूज ओवरराइट हो जाने चाहिए थर्ड और फिफ्थ एलिमेंट को छोड़ के. तो देखो होते हैं कि नहीं होते. यहाँ पे देख रहे हो, अभी यहाँ पर 6 एलिमेंट हैं. अब मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया. तो जस्ट टू रिकॉल, मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी. तो ये प्रिंट करेगा भी नहीं कुछ. इट हैज जस्ट असाइंड समथिंग एंड प्रिंटिंग नथिंग. जस्ट पे अटेंशन टू एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट पे देखो, दे आर गॉन. नाउ देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स. वही एलिमेंट्स थर्ड और फिफ्थ को छोड़ के. तो जो तुम नो रिजल्ट बोल रहे थे, इट इज नॉट लाइक दैट कि देयर इज नो रिजल्ट. रिजल्ट इज देयर. ठीक है. अरे चंगा सी, है कुछ लोग पंजाबी वाले. Yes, sir. Understood. ओके, गुड. बता देना मेरे को कम्युनिकेशन की दिक्कत लगे तो. आई एम वेल वर्स विद मोस्टली ऑल द नॉर्थ इंडियन डायलेक्ट. हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, भोजपुरी, मारवाड़ी, शेखावटी, एंड ऑफ कोर्स हमारी मेरठ मुजफ्फरनगर वाली लठमार. So we can have some fun if you wish to. चलो, now coming on to vector correction and updation. तो मैं ये वेक्टर आप लोगों को जस्ट ड्रॉप कर दे रहा हूँ, एंड आई विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट. Suppose there is a sports academy and they are recording the heights of their players, their sports person. कि हाँ, उनके पास 5-6 लोग हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं और उनकी हाइट वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, whether somebody is medium height or short height or tall, and they are putting it as and when the sports person is done. ठीक बात है. सो कैसा बनाए वेक्टर? मीडियम, शॉर्ट, शॉर्ट, टॉल, मीडियम, मीडियम, जिसकी जैसी हाइट थी वैसा वैसा आता जाए. We want to print it, we can print it. My goodness. Now correction, हम कह रहे हैं vector correction. Correction in the sense, suppose one day I realize, somebody realized कि ये जो पहला sports person जिसकी भी मैंने height enter की थी, this was wrong. It shouldn't have been medium. This person was short. तो हम क्या कह रहे हैं? देख लो क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं जो होना चाहिए. मैंने क्या बोला? हाइट वेक्टर के पहले इंडेक्स पे असाइन कर दो एक वैल्यू. कौन सी वैल्यू? अ कैरेक्टर वैल्यू विच इज शॉर्ट. ट्राई टू डू इट. आई वांट यू टू टाइप इट. तो आपने एक इंडेक्स जो पहले से एग्जिस्ट करता था उसके ऊपर कुछ नया लिख दिया, यानी ओवर राइटिंग कर दी है. हो गया करेक्शन? देख के बताना हो गया कि नहीं.
Done. Done, people. Please keep me posted. Clear? As simple as that. Now, these were, how many these were? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 people. So this is the way we correct. Suppose updating the vector. Now there is a 7th sport person. तो उसके लिए भी मेरे को एंट्री करना है यहाँ पे. तो either I can do that, मैं यहाँ पर ऐड करूँ उस एलिमेंट को कि वो जैसा भी है. But tell me, is it possible when this is 6 people? There may be 600 people. There may be 6,000 people. So is it every time possible that every time we update a vector like this, going to the vector itself and creating the vector altogether, giving a new value? So it doesn't seem like a good way to do it. How it is done is, we can check by a function called length. There is a function length, and what does it return? देख लो करके क्या रिटर्न करता है ये फंक्शन. वही जो नाम है इसका. It tells you the length of a vector. समझ गए? So this height vector contains height of, how many elements are there? There are 6 elements. Very fine. I know there are 6 elements. तो मेरी अपडेटिंग कहाँ पर आनी चाहिए? At the next element. तो I am saying, जो मेरा एग्जिस्टिंग वेक्टर है हाइट, उसके 7th एलिमेंट पे एक एलिमेंट और ऐड कर दो, which is, say there is a new girl who has joined this academy and she is of tall category height. तो हम कह रहे हैं tall. If I print this now, you can see that there are 7 elements now और वेक्टर आपका अपडेट हो चुका है. Okay, fair. Now, one thing particular, a few things, key things for now. अभी तक जो लोग आप लोग टाइप कर रहे होंगे, how many of you have realized that our studio tries to give you auto suggestions? Realize that? So your R Studio is trying to help you out. Suppose I type first 3 letters
तो आर स्टूडियो ढूंढेगा शायद मैं कोई फंक्शन टाइप करना चाहता हूँ या मैं कोई वेरिएबल टाइप करना चाह रहा हूँ, एंड इट विल गिव मी ऑटो सजेशन. इट इज बेटर, ऑलवेज बेटर टू स्टिक टू ऑटो सजेशंस, बिकॉज अगर मैं पूरा पूरा मैनुअली टाइप करूंगा, मे बी आई कैन मेक अ टाइपो and it will cause unnecessary errors. Same goes for functions. Suppose I am to type a function, say, like median. I may make a typo. I can make an error by uppercase, lowercase thing. So better to stick with auto suggestion. ठीक है, ध्यान रहेगा जी. Don't try to type everything. When there is facility, use it. It is for your own good. Mhm. Now, suppose you have to update multiple values in one go. Can we do that? Yes, we can do that. Suppose you want to enter 3 sports person in one go. So how do you do that? पहली बात, वेक्टर में आप देख चुके हो, you have to give indices in combination. So I am saying indices number, अच्छा 7 तो चलो हो गया. I am saying 8 and 9 and 10. That vector की इन 3 indices पे multiple values चाहिए. कौन सी multiple values चाहिए? I am combining them again. I want 8 to be tall, then to be short, in quotes or double quotes, and median. So you can update multiple values in one go. When I do this, and let's print height, it contains 10 elements now, last 3 updated in just one go. Okay, one day in the first session, in the very first batch launch session, I asked many of you are working class here, are working or have been working, have worked in the past, experienced people. Who are they? Can you give me a quick name, everybody? Those who have been working, those who are experienced. Those who have experience, may not be currently working, but have experience, have been into corporate, have had the taste of employee-employer sweet relationship. Okay, चलो ठीक है. Several people, because that's enough of coding today. Let's go to something again, some terminology. जैसे कल हमने कुछ terminology discuss किया था, what is what. So similarly again we are going to learn some terminology because we will be using it heavily in subsequent sessions. So you should know what I am referring to. So we will understand that with the help of an example. Okay, enough coding today. Take a sigh of relief, sit back, stretch for one, and pay attention.
How many of you are working from home currently? That is another fiasco in itself. Oh my goodness, so many people. How has been your experience of working from home? Not a good one for me. Personally, I would say, surely. Not a good experience. Okay, chalo. Great for you. Good for you. Okay, let's get back to business. We will see something with the help of an example. One thing I forgot to tell you, which is necessary, I realized it by when I looked at Rashi's screen. You can go to tools. On our studio, there is tools. Down below, there is global options. You can do it along with me. Go to tools. Last option is global options. You click on that. There will be a pop-up and it contains several options. But one for now, which you should really use it, is go to appearance. Here you can choose several themes, whichever you like. But what I want you to be comfortable with is the font size and font type. So maybe zoom it a bit, or maybe choose a better font size, choose a better font style. So make it a comfortable thing because it is going to stay for a long time with you. If you can handle this, it is all okay. I'm just telling for the sake of everybody, and apply. So whatever you like, but you should do it. Be comfortable with our studio. It's trying to help you out in several things, but some things you have to tweak for yourself. Okay, that was for one. Coming on to some theoretical part of data. Rashi, you can save everything and restart it now. I'm not doing anything on our studio. You can just pay attention to my voice and my screen and let it do its thing. अभी जो हम एग्जांपल कर रहे थे एम्प्लॉयज डेटा see I suppose I have employees data, then I have some types of variables, we are calling them. When I say variables, now by variable I mean columns in the data set. If I say vector, that is column in a data set. So vectors, variable, columns, one and the same thing for data science lingo. सपोज एम्प्लॉयज डेटा, हाँ जी, कैसा होगा किसी कंपनी में एम्प्लॉयज का डेटा, क्या क्या होगा उसमें? हाँ जी, देखो ये बोले सताए हुए एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले तो वो जो पट्टा लटकाए घूमते हैं हम लोग ऑफिस में, सही बात है. नेम, डिपार्टमेंट, वेरी फाइन. डेजिग्नेशन, ओके. और कुछ? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओके. और सबसे इम्पोर्टेंट, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट.
अरे सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, पैसा। पैसा कितना देता है भाई? क्वालिफिकेशन? कौन पूछ रहा क्वालिफिकेशन तुम्हारी? नौकरी करके तो देखो। अरे पैसे बताओ, पैसे कितने लोगे? छोड़ो, अपनी क्वालिफिकेशन रखो अपने पास। एचआर तो यही बात करते हैं। है तो नहीं कोई एचआर वाला यहाँ पे? मैं बहुत लड़ता हूँ एचआर वालों से, बड़े निकम्मे लगते हैं मुझे। चलो चलो, देखा हो गया। सपोज दिस दिस इज 25% है। अरे बस रुक जाओ, मान जाओ यार, मैं भी कुछ बात कर लूँ। एक्साइट हो गया भाई। I was talking about again terminology. What kinds of columns? मेरे columns में कैसा कैसा data आ सकता है? And there is a certain terminology for each kind of these variables which I am having. See, usually we will have मैं कह रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ किसी ने बोला था। आई एम नॉट कॉलिंग इट डेट ऑफ बर्थ फॉर नाउ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ का चलो एज मान लेते हैं। तो आई विल हैव दिस काइंड ऑफ, ऐसा ही कुछ डेटा होगा मेरा बेसिकली। So broadly, we have two types of variables. We call them categorical variables and we call them continuous variables. Categorical variables कौन से होते हैं? We are calling them categorical variables according to which I can categorize my entire data set. For example, अगर ये employees का data set है, this is data set of say 20 employees or maybe 200 employees. I'm not bothered about that. Say department. हाँ जी, कैसे होंगे लोगों के डिपार्टमेंट? कहाँ गए वो एचआर वाले भाई, बताना जरा। ऑपरेशंस, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, लीगल, एनालिटिक्स। Nowadays many companies have these departments, है ना? टेक, एडमिन and many maybe. They can think about it. हाँ सही बात है, अकाउंट। थिंक अबाउट इट। मेरे कंपनी में 20 एम्प्लॉय हो सकते हैं या 20,000 एम्प्लॉय हो सकते हैं। डिपार्टमेंट यही 10, 12, 15 रहने वाले हैं घूम घाम के। यस और नो? Now I am tweaking my statement. With the data science perspective, it means I can categorize the entire, all of my employees into these 10, 12, 15 categories. Yes or no? On the basis of department. है ना? मैं देख सकता हूँ ना, इतने लोग एचआर वाले हैं, ये लोग सेल्स वाले हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, राइट? तो कैटेगरीज बन गई। So in that sense, this is a categorical department. Department is a categorical variable.
Okay, and within categorical there can be different kinds. So this is nominal categorical. For example, department. तो ऐसे वेरिएबल को हमने कहा नॉमिनल कैटेगोरिकल. Okay, let's check out designation. हाँ जी, लोगों के डेजिग्नेशन कैसे चलते होंगे? डेजिग्नेशन कॉलम में क्या लिखा होगा? एग्जीक्यूटिव, टीम लीड, मैनेजर, वीपी, एवीपी, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर टीम लीड, सीनियर, यही चल रहा होगा ना? यस और नो? बड़े मैनेजर, छोटे मैनेजर, सब कुछ यही चल रहा होगा. नो, टेल मी अगेन. Again, I can categorize my entire employees according to designation. कितने एग्जीक्यूटिव हैं, कितने मैनेजर हैं, कितने छोटे मैनेजर, कितने बड़े मैनेजर, यस और नो? So this is again categorical variable, but this time I am calling it a different kind. This is also categorical, but इसको हम क्या बोलते हैं? Categorical तो है, categories बना सकता हूँ, but we call them ordinal categorical. Because there is an order in it. मैं categorize तो कर सकता हूँ, but I can order also. Order in the sense, I certainly know that executive is junior to team lead. Yes or no? And team lead is junior to manager, and manager is junior to VP, and so on. There is an order in the category. So that is why it is ordinal. Fair? Got the idea? I hope now you can understand कि डिपार्टमेंट को हमने नॉमिनल क्यों बोला है. बिकॉज इट इज जस्ट नॉमिनल. वो सिर्फ नाम के लिए कैटेगरी है, कैटेगरी हो जाएंगी, बाकी ठीक है. बट टेल मी, कैन आई से इन एनी सेंस दैट सेल्स इज ग्रेटर देन legal? Can I say in any sense that tech is lesser than ops? Can, all in all, what I mean to say is, can I say in any sense that there is order in these departments? There is no order. Fair? तो ऐसे वेरिएबल्स को जहां पर कैटेगरीज तो हैं लेकिन ऑर्डर नहीं है, नॉमिनल. जहां कैटेगरीज तो हैं और ऑर्डर भी है, उनको हम कह रहे हैं ऑर्डिनल. Then there is another kind which is we call interval categorical. For example, hmm, for example, PYR. हाँ जी, क्या होता है PYR?
अरे अभी तो बता रहे थे बहुत सारे लोग वर्किंग क्लास में रहे हैं। अरे वो एक एनुअल रेटिंग नहीं मिलती है तुम्हें? 1 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5. हाउ डू यू रेट योर सेल्फ? है ना? तुम हर बार 5 स्टार भेजते हो, तुम्हारा मैनेजर हर बार 3 स्टार ही भेजता है ना? So that's annual rating. Now tell me, someone is 1 star, someone 2 star, someone 5 star, and someone 4 star. और चल रहा है ये भी. This is also going on for all the employees. So tell me one thing. Again, I can categorize. Yes or no? मेरी कंपनी में इतने एम्प्लॉय 4 स्टार हैं, इतने एम्प्लॉय 5 स्टार हैं, इतने सिंगल स्टार हैं, नालायक लोग. तो अगेन आई कैन कैटेगराइज. तो कैटेगोरिकल तो है. अलॉन्ग विथ कैटेगरी ऑर्डर भी है क्या? अरे यस और नो, ऑर्डर भी तो है. 1 स्टार इज लेस देन 2 स्टार, एज सिंपल एज दैट. क्लियर कट ऑर्डर है. तो ऑर्डर भी है, कैटेगरी भी है. यहाँ तक तो बात ठीक हुई. along with order, PYR, previous year rating. What I am saying is along with order, यहाँ पर एक स्केल भी है. स्केल इन द सेंस, अगर मैं कह रहा हूँ that 3 star is greater than 1 star, I also know by how much. Yes or no? It is greater than 1 by 2 units. Four star is greater than 3 star by how much? How many stars? By 1 unit. So I have a scale also to measure by how much difference. Now tell me here, मैं कह रहा हूँ manager is senior to TL. हाँ होता है. By how much? Can I have a scale here? I don't know. Order मुझे पता है. But I don't have any scale to measure that what is the difference in that order. तो इसलिए जहाँ पर ऑर्डर भी है और स्केल भी है, उनको हम कह रहे हैं इंटरवल, बिकॉज देयर इज कांस्टेंट इंटरवल बिटवीन ईच कैटेगरी, विच इज नॉट हेयर. एग्जीक्यूटिव इज सीनियर टू टीएल, बिल्कुल ठीक बात है. नहीं, एग्जीक्यूटिव इज जूनियर टू टीएल एंड टीएल इज जूनियर टू मैनेजर, बट इनका डिफरेंस इज नॉट नेसेसरीली दिस सेम डिफरेंस. आई होप समझ आ रहा है. एम आई मेकिंग सेंस? Okay. So these are categorical variables. Then there is something we call continuous variables. What are continuous variables? See, जब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एनालिसिस इज ऑलवेज अबाउट सम नंबर. यस और नो? क्या एनालिसिस करेंगे? इट इज ऑलवेज ऑफ सम नंबर. इसका मैक्सिमम, उसका एवरेज, उसका टोटल, इसका मिनिमम. यस और नो? एंड ऑफ द डे, दैट्स व्हाट एनालिसिस इज. तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, विच आर नंबर्स एंड न्यूमेरिक एनालिसिस मेक सम सेंस ऑन दोज कॉलम्स.
उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। Like here we can say salary. बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुछ। Like salary of people will always be a number. Yes or no? 25K, 35K, 50K, 70K. Yes or no? तो continuous variables की पहचान क्या है? They are always number, and second condition for them is numeric analysis. Numeric function should make sense also. Like अगर मुझसे कोई बोले कि हाँ हमारे एम्प्लॉय की जरा एवरेज सैलरी बताना, तो मेक सेंस। देखना चाहते हैं हमारे ऑन एंड एवरेज कितने एम्प्लॉय पैसा ले रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय की टोटल सैलरी बताना, तो मेक सेंस। देखना चाह रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय पे कितना खर्चा हो रहा है कंपनी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है जी। अच्छा, तो सर ऐसे वेरिएबल्स कौन होते हैं जो होते तो नंबर हैं बट न्यूमेरिक ऑपरेशन डजंट मेक सेंस? ऐसे भी कोई होते हैं क्या? मैं तो यही कह रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं विच आर नंबर्स एंड न्यूमेरिक ऑपरेशंस मेक सेंस। व्हाट अबाउट दोज विच आर नंबर्स एंड न्यूमेरिक ऑपरेशंस डोंट मेक सेंस? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? अरे देखो, ये मेरा मोबाइल नंबर, ये तुम में से किसी का मोबाइल नंबर। मैं कह रहा हूँ हाँ हमारे मोबाइल नंबर का एवरेज बताना तो जरा, कोई सेंस है इस बात की? देखने में नंबर ही लग रहे हैं, बट डज न्यूमेरिक ऑपरेशन मेक सेंस? तो हाँ, जब न्यूमेरिक ऑपरेशन डजंट मेक सेंस, इट मींस दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी नहीं है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? अरे समझा कि नहीं? बताओ यार जल्दी जल्दी, कुछ कंफ्यूजन है तो वो बताओ ना। ये सन्नाटा नहीं होना चाहिए। सी कंसिडर माय कांस्टेंट बिकॉज सिंस वी आर इन ऑनलाइन interaction, I can't see you, so I will not know if you are facing some difficulty or you are confused or something unless and until you speak up. अगर समझ गए हो, can you give me another example of these variables which are numbers but numeric operation will not make sense?
यही समझना चाह रहा था। सी एक्सपीरियंस, व्हाई नॉट एक्सपीरियंस? थिंक ऑफ इट। एक्सपीरियंस, अगर मैं बोल रहा हूँ आई हैव सम एम्प्लॉय, I am counting their experience. Somebody is 10 years, somebody 12 years, somebody 4 years, somebody 0 years. और मेरे से कोई बोले कि जरा बताना आपके एम्प्लॉयज ऑन एंड एवरेज कितने साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, आई एम कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ दैट, so that is still a value. Number of dependents, same goes for it. अगर number of dependents की बात कर रहे हैं, somebody has 4 dependents, somebody has 5 dependents, somebody has 0 dependents, and now I am calculating what is on and average number of dependents of my employees. Makes sense. नॉनसेंस किनको कह रहा हूँ, जैसे मोबाइल नंबर बोल रहा था, या फैंटास्टिक सुरभि, ग्रेट ग्रेट एग्जांपल। एम्प्लॉय आईडी, यार मेरी एम्प्लॉय आईडी 109 है, किसी और की एम्प्लॉय आईडी 111 है, तुम कह रहे हो इसका एवरेज निकाल लो, तो कौन निकलेगा इसके एवरेज से? इसके एवरेज से जो निकलेगा वो किसका आईडी नंबर होगा, इस बात का कुछ लेना देना है इस बात से कि इन दो आदमियों का एवरेज है? और बताता हूँ, अगर क्लैरिटी होना चाहिए, नहीं है तो बताया करो। और क्या हो सकता है? हाँ फैंटास्टिक, और हो सकता है पिन कोड ऑफ देयर एड्रेस। अरे समझ रहे हो, मैं रहता हूँ दिल्ली में, कोई रहता है फरीदाबाद में, हाँ तो इनका एवरेज निकाल लो, तो बदरपुर का पिन कोड मिलेगा क्या? I don't know how many relate to this Badarpur thing. It is typically for the Delhi people, but I hope you get to this. तो ऐसी चीजों को हम क्या ट्रीट करेंगे जब वो नंबर्स हैं, देखने में नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उन पे न्यूमेरिक ऑपरेशन से कुछ हो नहीं रहा है, देन दीज आर आल्सो इन अ वे कैटेगोरिकल। तो मेरे लिए ये भी कैटेगोरिकल ही हो जाएंगे और हो भी जाने चाहिए। थिंक अबाउट इट, यस और नो? इफ आई एम टाइपिंग पिन कोड्स ऑफ वेरियस जियोग्राफीज, इन नंबर्स का मतलब नंबर नहीं है, ये देखने में नंबर लग रहे हैं, बट दीज मीन सिटी नेम्स और ज्योग्राफी नेम्स, यस और नो? So if numeric operations are not making sense, I will treat them also as categorical value. Okay, fair enough. Now within continuous, there can be two types. One is we call continuous में perfect continuous भी बोल सकते हो इनको, रेशो भी बोलते हैं इनको, रेशो वेरिएबल्स। रेशो वेरिएबल्स इज अ बिट टेक्निकल jargon, बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या किसको बोल रहा हूँ मैं? It is the variables which can take any possible value. For example, can somebody tell me
Your height. Okay, let's kill it. Hi, I'll take mine. 170 centimeters. Okay, ठीक है. Ajmal, wow, that's a rough coincidence that 170 centimeter converts to 5 feet 7 inches, roughly. So now, what I mean to say is, say I am saying my height is 5 feet 7 inches, which coincidentally is equal to Ajmal. But can any of us be very sure that our heights are same? Can we be dead sure? I mean to say it is not even 1 millimeter uh, upper or more or less. Nobody can be that sure, yes or no? As a matter of fact, I myself cannot be sure. If I am saying my height is 170 centimeters, can it not be 170.0001 centimeters? हाँ, हो सकती है. यहाँ तक कौन मेजर करेगा? So in that sense, height can take any possible value. तो इसकी डेफिनेशन रेशियो वेरिएबल की आपको डेफिनेशन लिखी हुई कैसे मिलेगी? लिखी हुई कैसे मिलेगी? लोग कैसे बोलते हैं उसको? हाँ, लोग बोलते हैं स्मार्ट दिखने के लिए. बड़ी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन बना देंगे किसी चीज की कि हाँ, ओ हो देखो, हमने ऐसी लैंग्वेज बनाई है तो भी करेगी बच्चों को. मतलब कुछ नहीं होता इन बातों का. वो क्या कहते हैं दैट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आर दोज वेरिएबल्स which can take any possible value between two consecutive integers. कहने का मतलब वही है उनका. अगर मैं कह रहा हूँ लोगों की हाइट क्या हो सकती है, तो 170 और 171 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है. और कितनी हो सकती है? हाँ, प्रशस्ति वो तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, उन्हें तो पहले साइड में रख दिया. अब तो उनकी बात कर रहा हूँ जो कॉन्टिन्यूअस हैं. अरे यही तो बात हो रही थी अभी. जब उन पे न्यूमेरिक ऑपरेशन सेंस नहीं करते तो वो तो हुए बाहर मेरी लिस्ट से, वो तो गए कैटेगोरिकल में. अब कैटेगोरिकल में देखेंगे उनका क्या करना है, वो बाद में सोचेंगे. और कॉन्टिन्यूअस नहीं है. अब जो बचे उनमें क्या हो सकता है कॉन्टिन्यूअस में, वो बात करते हैं. तो वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विच कैन टेक एनी वैल्यू. ऑफ कोर्स इट कैन टेक एनी वैल्यू. कैन यू टेल मी हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल बिटवीन 170 एंड 171? प्रैक्टिकली अरे इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं, है कि नहीं? अरे बोलो जल्दी जल्दी, यस नो कुछ तो बोलो. लाइट बंद हो गई क्या आसमान की? लुढ़का दिया गया? हैवी हो गया क्या? अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, ग्रैब सम वाटर, टहल का थोड़ा सा. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड 4 hour session and going in, going on and on, और वो भी second half of the day. So I can understand it can become tiresome. So okay, it's 6 around 9. Okay, so we can resume at what? How much? 5 minutes, 10 minutes? What do you want?
Okay, very fine. We resume at 6:20. So, okay, fine. Take a break. Take a break. Freshen up. See you there. Just please be back in time. Say again. Uh, Please bring in the chat box those who are back. Okay. Okay. Let's do. Let's conclude this quickly. Any question in that continuous variable thing? I was talking about continuous variables. One type of that is perfect continuous, जिनकी हम बात कर रहे हैं. They can take any possible value between two integers. For example, height of people. Height of somebody can be 170 centimeters. It can be 0.01. It can be up to the precision of indefinite decimal places. So I hope that is settled. Another type of number variables can be, which we call discrete. They are also numbers. They are also numeric operations make sense, but they cannot have decimal part. That rings a bell. Is that a fair opinion? What do you say? For example,
जो आप लोगों ने बोला था, number of dependents, they are also numbers, and yes, numeric operations make sense. This can be also analogy of, say, I can call them, अगर dependent से clear, say I'm saying number of reportees. How many people report to this person? So again, there can be a few reportees, there can be zero reportees, somebody is a fresher, there can be multiple number of reportees, somebody is a very senior person. But think about it, number of reportees, किसी को या तो 4 लोग रिपोर्ट करते होंगे या 5 लोग रिपोर्ट करते होंगे. 4.5 people cannot report to someone, so it cannot have a decibel part. बताता हूँ प्रशस्ति. फिलहाल ये तो समझ आया, मैं कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किनको कह रहे हैं, which can take any possible value. So those are perfectly continuous. Then there is something called discrete. Discrete are those which cannot have decimal part. They can be only whole numbers. Now, प्रशस्ति का कहना है कि क्या इनको एज कैटेगरी ट्रीट कर सकते हैं? से कैटेगरी ट्रीट कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग स्पेसिफिक अबाउट कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में जैसे डिस्क्रीट हैं. यू कैन ट्रीट देम एज कैटेगोरिकल ऑल्सो. यू कैन कैटेगोराइज योर पॉपुलेशन कि इसको 4 लोग रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको 4 लोग रिपोर्ट करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई रिपोर्ट नहीं करता, ऐसे कितने लोग हैं जिनको 20 लोग. सो यू कैन ट्रीट देम एज कैटेगोरिकल. What I meant to say is vice versa is not true. You cannot treat categorical variables as continuous at your will. Continuous variable को अगर categorical की तरह treat करना है, तो that you can do when needed be. ठीक है, I think not that confusing now. Attends to something. So this was a little bit about terminology of these variables. मैं बोल रहा हूँ categorical variable या continuous variable. Continuous कब होंगे? When they are numbers, and as numbers they make some sense. Otherwise everything is categorical. Then within them there can be different kinds.
यहाँ तक बात हुई. Now come back to our studio. Within this week, what will happen? You will receive mails from me जिनमें ऐसे ही codes होंगे. You can run them line by line to understand several functions, कुछ functionality along with some comments. ठीक है? तो उससे you will, I just need to see more than that how much time you devote. What is more important, at least in some initial weeks, is that you are consistent. So I would need you to be practicing, if not every day, at least every alternate day. I promise I will not take much of your time. I know you people are working and you are already busy. That's why you are in weekend program. But having said that, every day, 20 minutes, 30 minutes, I mean, that will do. That much you can do. Yes or no? इतना तो चल सकता है. सही बात है. So can I expect everybody would be investing some time, if not every day, at least alternate day, 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes, whatever. So I will keep sending, watch out for my mail. I will keep sending you mail. And meanwhile, to practice at your own pace, we will have some fun exercise which is built in R. Before going to that, let's do one thing and make it a habit that when you start something new, let's clean everything. These variables which are here on environment, they are occupying memory. So you see this broom sign over here? We click on that and it will ask you that remove all objects from environment. And yes, so let's clean environment so that memory is free. There is history also here. So let's clean history also. Again, there is a broom sign, clean history. Let's save our codes, whatever we have run. Cut, you just try to close these script files. It will ask you to save. So our scripts are saved. Our console is clean. All set. Now, come down to this tab. There is a tab written packages. Click on that. On packages, there would be a list of packages and there would be some sub tabs, install and update, this kind of thing. I'm doing this. I'm doing it already. Ajmal, I'm on the way. See, what are packages? Packages are some things to aid our learning and our practices and our analysis when we will go into deeper processes. When R was built, it was built with certain functionality. Along with time, it was realized, although it was a very powerful tool already, along with time, it was realized that it should need some extra facilities also. So then there were some additional packages written, which are not in default package. So default one is that which you have already installed.
So now there are add-in packages kind of thing, which are kind of Excel में जैसे add-ins होते हैं, just for some extra facility. So these are packages. So we are going to install a package which will help us in our learning journey. So click on install. This pop-up will appear and type swirl, SWIRL. You will get auto suggestion as usual. Showing you again. Go to these packages here in the fourth window, fourth pane. Click on install. A pop-up will appear like this. So repository is CRAN. Keep it at CRAN and type package name swirl, SWIRL. Everybody here? कोई ऐसा जो यहाँ नहीं पहुँचा है अभी? Other thing, you leave it to default. Install from repository CRAN. Install to library. It should be R, Win library, this kind of thing, default one. You don't change it. There is a checkbox here, install dependencies. Yes, keep it checked. Don't change anything. And click install. अगर कोई नहीं पहुंचा है अभी यहाँ तक तो बताइए. Sit back. It will install and within a minute you will receive a message package swirl successfully unpacked and MD5 unstep. Yes, Nishant, let it install, whatever it is. Let it install everything. Finally, it will show you that it is installed properly. Everybody can drop me a done, those who are done. Where I'm going with this is a package which answers you, it is kind of an interactive session of questions and answers. It will ask you to do some nitty-gritty job and it will keep on increasing complexity.
one by one question after the other. Okay. If you are able to do it, very fantastic. If you are confused or you are not able to do it, it will give you some hints. So this is something your self-learning module. So this is going to be a good help in the initial couple of weeks. So this package is installed now. To call this package, you call it like that. You type in a function name library, and I type swirl there. Library swirl. When you do this package will be initiated, and it gives you a text message that hi, type swirl when you are ready to begin. Those who are here, stay with me. Madhav, please switch on mic. What is the error you are seeing? Oh, Madhav, are you using company provided laptop? Is it a company provided machine? I suspect your C drive is secured. Abhinav, what about you? Is it the same error? Yes, sir. Okay, so what about the Sir, if you can connection see that- my screen, so it will be very helpful for me. Just in a moment. Warning message didn't come. Acha, other than that, it is okay. Then it is fine, Rashi. It's all okay. It is because of R version. My R version is older. I installed R several years ago. Did not update it. So it is showing me that warning. So, बाकी ठीक है. Unexpected error. Now that's something unexpected. क्या unexpected हुआ है भाई? जरा description देखो उसका. डालना मेरे को क्या है? Abhinav, share the screen. You are presenter now. Let me see. Sir, you can see my screen. I can see. Abhinav, leave your mouse Yes, sir. and keyboard. I am Okay. requesting keyboard and mouse control. So please give me control. Okay, sir. Yeah. Okay. Library. Okay.
It's fine, Abhinav. I hope this time it will work. Okay, sir. It is downloading properly now. So let it be. You will see this execution sign here, this red button. That means Yes, sir. it is happening. Downloads are happening. You see, all the messages are coming now, successfully unpacked. Yes, sir. So let it install completely. I think it's done. Okay, fantastic. It's done, Abhinav. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, very welcome. Who else? और किसका रह गया? हेलो सर. Yes, Madhav. सर मेरा ये सेम यही प्रॉब्लम था. वो आर पैकेज के लिए बोल रहा था, तो आपने क्या मतलब टाइप क्या करा था? See, if it is not happening by try doing this, I'm dropping in the chat box. Okay, sir. Or maybe I'll show you it allows. You will, rather than installing it by package tab, you can give manual command, and where you will set dependencies is equal to true. तुम्हारा मशीन मैक तो नहीं है? Is it a Mac or Windows? Windows. Windows. Then it will work fine. Just copy paste it and run, and I think maybe it will work. Okay, sir. However, I suspect that it is not because of that. It is because your C drive is secure. Maybe you can give it a try. Nishant, you are done. Everybody else done? और किसी का कोई problem other than Madhav currently? किसी का कोई problem? बाकी सब लोगों का हो चुका है installation. Seems good. Madhav, could you share screen for once? What's happening at your end? सर वो अभी इंस्टॉल हो रहा है. एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ. हाँ, स्क्रीन शेयर तो करिए तो ना, वो तो इंस्टॉल होता ही रहेगा, वो तो कर रहा है जो कर रहा है. Okay, meanwhile, before I forget, everybody please drop a present in the chat box. Please, nobody should miss it. Leave everything else. Drop a present in the chat box. फिर से एरर आ रहा है. आप देख रहे हैं शायद. Not yet, Madhav. I can't see the screen for now. Here it is now. सर आपको कुछ ऑप्शन दिखा है? वुड यू लाइक टू यूज अ पर्सनल लाइब्रेरी इंस्टेड? No, click on no. वेट अ मिनट.
Sir, again it is showing error. Got it entirely. It is written there that your C drive is not writable. That folder is not writable. What you can do is go to this folder. जो folder का path mentioned है ना यहाँ पर, Yes. users, admin, document, R. Is it a company provided machine? Madhav? No. It should not have happened. You go to this path और इस path में जितने folders लिखे हुए हैं, you right click on them, go to properties and उनको writable कर दो. They must be वहाँ पर properties में आप देखोगे read only. So uncheck that read only box. Okay, sir. Wait a minute. Okay, let's do one thing. Madhav, I'm running short of time, so please pay attention to screen for my screen for now. Okay, you can do that Okay, later sir. on, or maybe you can give me a ping. I'll guide you how to do that. तो कुछ ना कुछ उसका Okay, layout निकल जाएगा. For now, let's pay attention to कि करना क्या है अभी. Why why we have installed Swirl and what I'm trying to do with it. I hope everybody has marked your attendance as present here. Nobody should miss that. Let's get back to business. So we have installed a library called package called Swirl. Now this Swirl is in the library section. This is available for me to utilize. Now what is the utilization of this package? We will install in subsequent sessions. We will install several packages depending upon उनकी utility जैसे जैसे हमारे सामने आएगी. Something for graphics, something for calculation, some packages for practice, just like this one. So it says hi, type Swirl when you are ready. So I am typing Swirl. It is giving me auto suggestion. Very fantastic. I take that. So type in Swirl and enter. You see, it is giving you messages in red, and then it is giving you some question in blue font. So welcome to Swirl, please sign in, same name, different name. What shall I call you? It is trying to be friendly with you. So, okay. You may type in your name and enter. Now it will keep you guiding on that what you have to do next. So try to read a line. पढ़ के देखिए मैसेज क्या कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है. Okay, it is guiding you. It is giving you complete instruction. Maybe you realize that. So it is trying to train you onto that when you see these three dots in this lesson, that means you should press enter. So let's go, press enter. It gives you further instructions. That how you will have to answer questions. How you should respond to Sword so that it understands. Like here, it gives you option 1 to 3. You have to press any of them and enter whichever option you choose. Getting it, everybody? Which option should you choose here? Now here are three options.
It is just for the sake of example. So you can enter any option 1, 2 or 3 and press enter. अरे देख लो, तीनों का मतलब वही तो है, जस्ट एग्जांपल के लिए पूछ के देख रहा होगा तुमसे, ठीक है ठीक है. So anyway, it will go to next level. So enter any option and enter. Now there are some things what you should type when you want to do anything. You may want to discontinue this session and continue here itself. You may want to start right from the beginning, so cancel everything. You may just want to do something else meanwhile keeping Perl open. So there are some functions उसने बताया हुआ है क्या टाइप करने से क्या होगा. So you can just copy paste it somewhere. If you cannot remember, of course you will not remember this. So just keep copy it and paste somewhere. Select this, copy and paste somewhere so that you can refer to it later on. Okay. Then there are again those 3 dots. हाँ जी, क्या मतलब था इनका 3 dots का? अभी थोड़ी देर पहले बताया था सॉल्व नाम. प्रेजेंटर? अरे वो तो मैं हूँ. Yes, enter. ठीक है. So we enter and it gives you, now it gives you what do you need to practice. What is the option? So there are several things. So we will go to detailed things later on. For now, we are on programming basics, so we will stick to that. So let's select option number 1. Pretty straightforward. Everybody with me? कोई छूटा तो नहीं है पीछे? Anybody with any difficulty? So you will start off with our programming basics. You select this one and it will install the course. And now you can choose a course or you can type 0 to exit the world. So currently there is only one course, that is our programming. You can choose that and go ahead. ठीक है जी. It will keep asking you like this. It will ask questions. It will ask you to type something. You may type options. You may type the code. जैसे जैसे वो बताते जाएगा. Simple से task आप करते चले जाएंगे. And as your course will proceed, you will kind of revise what we have done so far. So up to vectors, you should be able to complete. Yeah, Nishant. See for yourself. That's what we are trying to do. I want every one of you to get to a certain level of coding for once, and so that then we dive into analysis by that coding. तो पहले कोडिंग में कंफर्टेबल हो जाएं आप लोग सारे के सारे, तब फिर डिटेल्ड एनालिसिस की बात करते हैं.
All good? मोहित बत्रा जी क्या कर रहे हैं आप? 5-6 डिवाइसेस से लॉगिन है आपका. I mean, I don't mind that, but is everything okay? Is it going fine? If you guys are logging in from multiple devices, it doesn't. Okay, very fine. It is all fine by me. Fine with me. Just if you have logged in by 2 devices, just name them like cell phone and PC kind of thing, like Mohit PC or Mohit cell phone, that kind of thing, so that I know. Because I need to make you presenters every now and then, so I should know which device I should make you presenter on. Okay, it will start off with selection 1, R programming. You see, it will again give you option basic building blocks. You will start off with this, and you should be able to go up to vectors. मे बी अगर उससे आगे आप जाते हैं, इट्स ऑल फाइन विद मी. अगर आप जा सकते हैं एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट, समझ में आ रहा है तो बढ़िया. अदरवाइज यू कैन स्टॉप एट वेक्टर्स, बट वेक्टर्स तक तो आप लोगों से हो जाना चाहिए. मीनवाइल मैं अपने एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं भेजता ही रहूंगा आपको. नाइस, ऑल गुड. So also before we depart for today, initial sessions are a bit boring for people who are very handy with coding, and initial sessions are a bit confusing because it has been kind of bombardment of functions and terminology. कितने लोगों को लग रहा है ऐसा? It happens. It is a common feeling. I know that. So yes. So it kind of sometimes it makes anxious, but trust me onto that. Within next week, it will become damn interesting. You will be enjoying it like everything because we will be dealing with a real-time data set next weekend. Well, so enough for one weekend. Yeah, Rashi, I can understand. I fully understand that. You see, I myself knew it. I said it myself. It happens with several students in every batch, but what I know very well, I don't believe it. I know it. Within next week, you will start enjoying it. Within third week, it will be uh, it will be a roller coaster ride. You will be enjoying it. Well, all said then. So let's call it a day. So have a happy week ahead, guys. Bye bye, and take care, everyone. Stay safe, stay healthy, stay happy. I'll see you next weekend. Okay, guys. Very welcome, all of you. Thank you, guys. Bye bye, and take care.